Okay, in this lecture we are going to discuss about or we are going to solve questions from your miscellaneous exercise of the topic integration. Our first question is 1 upon x minus x cube. You know what to do in this case. Your first step of simplification will involve that I can take x common in the denominator, so this is x times 1 minus x square dx. Alright, and you can further factorize this thing as x times 1 minus x times 1 plus x dx. Alright, so this is the first step of simplification. Now we know that the denominator is in the factor form. I can convert this into factors by using the partial fraction method. So this is 1 upon 1 minus x into 1 plus x, which under the partial fraction method can be written as a upon x plus b upon 1 minus x plus c upon 1 plus x. Okay, now you need to find the values of a, b and c. कैसे find it करेंगे? 1 equals to, if I shift this entire term to the other side, this is going to become a times 1 minus x into 1 plus x plus b times x times 1 plus x plus c times x into 1 minus x. Okay, now you can put the values. If I apply, we can apply two methods to find the values of a and b. One is by comparing both sides for the various powers of x, and there is another method where we can substitute any value, any random value on both the sides. Particularly, I am going to pick the values in such a way that coefficients of one of the two terms become 0, and the third term gives me the value of that particular coefficient constant. Okay, so if I put x equals to 0 over here, this is going to give me that 1 equals to a times 1 minus 0 into 1 plus 0, and these two terms will become 0 and 0, so that gives me a equals to 1. Okay, similarly I can put x equals to 1 on both the sides. If I put x equals to 1 on both the sides, then I'll have 1 equals to 0 plus 2b plus 0, and that gives me b equals to 1 by 2. So you got your second value. And if I put x equals to negative 1, put x equals to negative 1, that is going to become 1 equals to 0 plus 0, and here it will be minus 1 and minus 2. So this will become c times 2. So c is also equals to 1 by 2. So we got three values. One is a as 1, b as 1 by 2, and c as 1 by 2. Now, in order to integrate the function, this is going to be, integral will become, integration of a is 1. So 1 upon x dx. Then you have b, which is 1 by 2. So this is 1 by 2 times integral of 1 upon 1 minus x. Note this thing, I am keeping the constants outside the integral. And the third is also c, which is integral of 1 by 2 1 upon 1 plus x dx. Okay, so integration of this thing is going to be log of mod of x plus half times log of 1 minus x divided by minus 1, which is the derivative of 1 minus x, plus 1 by 2 log of 1 plus x plus c. Okay, so if I club the terms together, this is going to be mod of log of mod of x, and taking half common from this thing, this is going to be log of 1 plus x, the positive term in the numerator, and this negative term will go in the denominator of the function. Okay, so this is the final answer to the question, which is log of mod x plus half log of 1 plus x upon 1 minus x plus c. Okay, so my next question involves that we need to integrate the function 1 upon root of x plus a plus root of x plus b. Now, simplest trick is, or the first step of simplification will involve that you need to get rid of the square roots from the denominator. तो क्या करेंगे इसके लिए? We are going to rationalize the denominator, which is 1 upon root of x plus a plus root of x plus b. इसके लिए क्या करेंगे? इसका rationalizing factor होगा x plus a minus root of x plus b whole upon root of x plus a minus root of x plus b. Okay, this is the rationalizing factor. If I simplify the denominator, this is going to become x plus a minus x plus b, and in the numerator you have x plus a under the root minus root of x plus b under the root. Okay, this is the case. This further becomes x plus a minus x plus b. So this gives me a minus b in the denominator, which is a pure constant, x plus b dx. क्या बनेगा? 1 upon a minus b, and here you need to integrate the function, or I can also write my function like this. Instead of this part, I can write x plus a to the power 1 by 2 minus x plus b to the power 1 by 2 dx. Clear? Now if I integrate the function, क्या बनेगा आपके पास? This is 1 upon a minus b, and this will become x plus a raised to the power 3 by 2 upon 3 by 2 minus x plus b raised to power 3 by 2 upon 3 by 2
can take the denominator common outside, and final answer will become, finally I am going to get 2 by 3 times a minus b. Inside the square bracket I will have x plus a raised to the power 3 by 2 minus x plus b raised to the power 3 by 2 plus c. So this is the final answer to your second problem. Okay, so I hope this thing is clear. If we review this thing, initially हमने rationalize किया, that gave me that the denominator part becomes constant a minus b, which comes outside the integral part, और उसके बाद जो आपके पास inside function है उसको आपने integrate किया by using the direct integral rule, और आपके पास final answer generate हुआ. Now let us move on to the next question, third question. क्या क्या मैंने third question में आपको? Third question is integration of 1 upon x times root of ax minus x square. Okay. Now in this particular case आपके पास outside एक x है, inside आपके पास ax minus x square है. So we have a trick for this question. क्या trick लगाएंगे हम? Inside the square root part हम सबसे highest power of x को common लेंगे. क्या आप common ले सकते हो? You can take x square common from the square root part. It will become x once it comes outside, and here you have a by x minus 1 and dx over here. So I can rewrite this thing as 1 upon x square integration square root of a by x minus 1 dx. Okay, now comes the substitution part. Let करते हैं हम a by x minus 1 equals to t. Nearly most of the questions हम substitution apply करते हैं, so simplify the integral. So if I take a by x minus 1 equals to t, this is going to give me minus a by x square dx equals to dt, or I can say that 1 by x square dx equals to 1 by or minus 1 by a dt. Okay, so this covers the simplification part. Now if I write the next step of my integral, this will become 1 by x square आपके पास है, dx आपके पास है, that term becomes minus 1 by a, which is a constant term, can be taken outside the integral. Inside I am left with 1 upon root of t dt. This will become 1 by a t to the power minus 1 by 2 dt. If I integrate this thing, this becomes 1 minus 1 by a t to the power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c. Okay, so in short I am having minus 2 by a outside and t raised to the power 1 by 2 plus c. Once again if I substitute the value, what was t? T हमारे पास था a by x minus 1, so this becomes a by x minus 1 raised to the power 1 by 2 plus c. This is the final answer to the current question. Okay, so I hope you got the concept. आपने सबसे highest power of x को common लिया, which is x square over here. x square outside आ गया तो x बन गया, inside आपके पास बना a by x minus 1, और आपने square root के inside जो term थी उसको t substitute करके आपने further integral को simplify किया. Let us move on to the next one. Our next question is fourth one. Let's take this thing. Question number 4. This is my question number 4 over here. 1 upon x square into x to the power 4 plus 1 raised to the power 3 by 2. So we are going to apply the same method जो हमने third question के लिए apply किया था. देखो, the power of the expression is, अगर मैं इस इंटीग्रल को देखूं थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, x to the power 4 plus 1 raised to the power 3 by 4. This power, or this is called radical power or the fractional power. तो fractional power में जो आपका fraction है, that is 3 by 4. जो नीचे number है आपके पास denominator में, that is 4. That tells me if I need to take any number or anything common outside the part, that should be x to the power 4. Okay, so just observe this thing. अब हमने क्या किया, हमने common mark कर लिया कि हमने x to the power 4 outside the radical power common लेना है. तो जब ये x to the power 4 outside आएगा तो क्या करेगा ये अपने साथ अपनी power लेकर आएगा. The power was 3 by 4. Inside आपके पास क्या आ रहा है, 1 plus 1 by x to the power 4 dx over here. Okay, so outside आके आपके पास क्या बना, this simplifies and this becomes 1 by x square into x cube, which is x to the power 5. Inside I'm left with 1 by 1 plus 1 by x to the power 4 dx. Okay, so अगर हम इसको एक ट्रिक से बताएं तो हम इस मेथड को जनरली कुतर से मार्क करते हैं. Okay, we always say that this method is कुतर. तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे भी आप सेम मेथड अप्लाई कर रहे हो. जस्ट अ सिंपल एक नेम दे रखा है हमने, ताकि जब भी हमारे माइंड में आए कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन बन रहा है, वी ऑलवेज कम अक्रॉस हो के कुतर अप्लाई हो रहा है, हम इसकी हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ थिंक ऑफ द सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे 3 by 4 है आपके पास एंड 3 by 4 हो गया. थिंक ऑफ द सब्स्टिट्यूशन. आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट 1 plus 1 by x to the power 4 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, which is t over here. इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -4 upon x to the power 5 dx equals to dt. मेरे पास x to the power 5 अवेलेबल है, dx अवेलेबल है, तो इसकी टर्म
या इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, दैट विल बिकम -1/4 dt over there. Okay, so this is the substitution part. अब अगर मैं इसके बाद इंटीग्रल को रीराइट करूं तो क्या बनेगा? इंटीग्रल विल बिकम 1/x⁵ जो dx के साथ है -1/4 dt में कन्वर्ट हो गया, which as a constant will come outside. Inside मेरे पास है 1/t⁴ dt over here. Okay, so इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? This becomes t⁻³ dt and क्या करोगे? पावर में 1 ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड कर दो. Okay, so this becomes this is 1/4, it will cancel out with this thing, so minus of t⁻1/4 plus c, which is minus of क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने t को 1 + 1/x⁴, so minus of 1 + 1/x⁴ raised to power 1/4 plus c. That is the answer to the correct question. Okay, so try to solve the question on your own. Once you have the simplification, आपको ट्रिक पता लग गया, आपको हिंट मिल गया, तो पॉज द वीडियो और उसके बाद खुद से सॉल्व करो. एट द एंड मैच द आंसर्स. तभी आपको पता लगेगा कि इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, या छोटे-छोटे जो हिंट्स आपको इन बिटवीन आप जिनकी वजह से क्वेश्चन को आगे नहीं प्रोसीड कर पा रहे, जैसे आपको हिंट पता लगता है या आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचते हो, तो पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करके आंसर को मैच करना चाहिए. ओके, सो दिस वे यू विल लर्न द थिंग्स. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. हमने वही चीज़ किया कि रेडिकल पावर थी तो हमने उसके अकॉर्डिंगली आउटसाइड कॉमन लिया. दैट हेल्प्स अस कि हमने सिंप्लीफिकेशन कौन सी मार्क करनी है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, और उसके हेल्प बेसिस पे हमने क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट वन. Now let us take our next question. Is this question number 5? Again this question involves radical powers. क्या क्या आ रहा है? x⁴ 1/2 आ रहा है, x⁴ 1/3 आ रहा है, both are the radical powers. तो यहाँ से हिंट क्या मिलता है? देखो रेडिकल पावर्स को रिमूव करना है ना, तो आपने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया. यू नो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ रहा है? 6 इज द एलसीएम. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी सब्स्टिट्यूशन इसी के अकॉर्डिंगली चलेगी. लेट्स से x = t⁻6. इसका रीजन क्या होगा? जब आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपके जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं वो रिमूव होंगे, व्हिच विल हेल्प यू टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल, और उसी की हेल्प से आप इंटीग्रेट कर पाओगे. सो क्या बनेगा यहाँ पे? Before this, if I change dx into dt, so dx can be written as 6t⁵ dt. Okay, या प्लस बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? If I put t equal to x equal to t⁻6, this will become t³ plus t⁻6 put करने पे 1/3 है, so this will become t², and here it will be 6t⁵ dt. Okay, तो ये आपका इंटीग्रल बना. Now obviously I can take 6 outside. t⁵ है, नीचे t² कॉमन ले सकते हो, आपके पास क्या लेफ्ट आउट होगा? t+1 and dt over here. This is nothing but t⁻3 upon t+1. Okay, after simplification I am left with this thing. So this is the integral so far that we are achieving, और simplified form में आपके पास बन रहा है. क्या अगर आप ऑब्जर्व करो, सो दिस इज रैशनल फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर में क्यूबिक फंक्शन आ रहा है, डिनोमिनेटर में t+1 आ रहा है. हाउ टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन? इसमें आपको पहले लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करनी पड़ेगी. सो इफ आई गो फॉर द लॉन्ग डिवीजन, न्यूमरेटर इनसाइड will act as a dividend, denominator will act as a divisor, so this is nothing but t², this is t³ plus t². Change the sign, this will be minus of t². स्टिल आपकी जो डिग्री ऑफ द डिवाइजर है वो कम है, तो आप एक बार और डिवाइड करते हैं. सो माइनस टी के साथ आएगा माइनस ऑफ t² minus t. Okay, so minus t over here. Change the sign. This will cancel out. This is t over here, and again once plus 1 लिख के आपके पास बनेगा t+1 and minus and minus. So this is the case. अगर आप डायरेक्टली इसमें t³ में +1 -1 करना चाहते हो तो उस पे से भी आप सॉल्व कर सकते हो. then you need to apply the remedy for a³ plus b³. तो हमने लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किया जस्ट टू कीप दिस थिंग सिंपल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे. तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीराइट आवर इंटीग्रल. और इसके बाद क्या बनता है वो देखते हैं. माय इंटीग्रल इज गोइंग टू बिकम क्वोशिएंट इज t² minus t+1, so 6 outside and t² minus t+1 dt, and remainder is -1 upon divisor which is t+1. ये आपके पास कंप्लीट होगा. So this will become 6 times t3 upon 3 minus t² upon 2 plus t minus log of t+1 plus c. Okay, so this is the complete integral, and if I back substitute the value of t over here, t आपने substitute क्या करना है? If I observe, तो मेरे पास back substitution में t is nothing but 6th root of x. So this will become 6 times, and this is going to be x to the power 1/2 minus x to the power 1/3
3 plus x to the power 1 by 6 whole upon 3 whole upon 2 and minus log of x to the power 1 by 6 plus 1 plus c. So this is your final answer. So ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन शो किया और ये आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे बना है. सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. सिंपल सी ट्रिक आपने जो ऑब्जर्व करनी थी या इस केस का जो हिंट था वो यही था कि आपके पास 2 and 6 जो रेडिकल पावर को इन्वॉल्व कर रहे थे उनका एलसीएम हमारे पास 6 था, तो हमने x इक्वल्स टू t टू द पावर 6 को यूज किया ताकि आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो सिंपलीफाई हो सके. ओके, दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x upon x plus 1 into x square plus 1. ओके, सो क्लियरली विजिबल है कि आपके पास यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई होगा और इंटीग्रल को अगर मैं डिनोट करूँ आई से, सो आपके पास ये कंप्लीट इंटीग्रल है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको पूरे एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो माय एक्सप्रेशन इज 5x upon x plus 1 into x square plus 9. तो आपको मेथड पता है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, दैट इफ आई हैव डिनोमिनेटर एज अ लीनियर एक्सप्रेशन तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा, और अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है व्हिच कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, तो उसके न्यूमरेटर में हमें एक लीनियर फंक्शन लेना पड़ेगा 1 डिग्री लेस का. ओके, सो दिस इज द केस. अब आपके पास क्या बनेगा, 5x इक्वल्स टू, लेट्स वंस अगेन शिफ्ट दिस टर्म टू द अदर साइड, 5x इक्वल्स टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c टाइम्स x प्लस 1. ओके, तो यहाँ तक हमने अचीव किया अपना रिजल्ट. अब a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए क्या करेंगे, I'll put x इक्वल्स टू -1 ऑन बोथ द साइड्स. अगेन आप ब्रैकेट्स को ओपन अप करके वेरियस पावर्स ऑफ x को कंपेयर कर सकते हो ऑन बोथ द साइड्स. वहां से भी आपकी इक्वेशंस बनेंगे a b एंड c में, जिनको सॉल्व करके आप a b एंड c की वैल्यूज निकाल सकते हो. बट आपके पास अनदर मेथड है कि आप x की वैल्यू -1 पुट करो और आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, व्हाटएवर you substitute the value of x, तो आप both sides पे पुट करोगे as per the rule of algebra, this will hold. Okay, so अगर हम -1 पुट करते तो ये बनेगा 5 times -1 equals to a times 10 plus 0. Okay, so I'm getting a equals to -1 by 2. Okay, if I put x equals to 0, just observe left hand side will become 0, right hand side will become 9 of a, और यहाँ b times 0 तो 0 होगा और ये 0 plus 1 1, so plus c आ जाएगा आपके पास. So c becomes minus of 9a which is minus and 9 times minus half which is 9 by 2. So c is equals to 9 by 2, and if I put x equals to 1, left hand side will be 5, right hand side will be 10a plus b plus c into 2. Okay, so you are getting 10a plus 2b plus 2c equals to 5 over here. c and a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, so यहाँ से 2b अगर देखा जाए, so this will be 5 minus 10a minus 2c, 5 minus 10 times minus 1 by 2 minus 2 times 9 by 2, and this is twice of b. ओवरऑल आपका जो टाइम इसमें लगेगा वो सिर्फ a b and c की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए है, -9. Okay, so this becomes 10 by 2 minus 4 is 2b, or 2b is equals to 10 minus 8. Again, this is again इसको solve करके this is 5, b1 है, तो b की वैल्यू आपके पास 1 by 2 आ गई. ठीक है, so once I have the value of a, b and c, अगर आप इंटीग्रल को देखो तो क्या बनेगा, इंटीग्रल will become, इसे हम मार्क कर सकते हैं, my integral will become integration of -half constant आउटसाइड रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 upon x plus 1 dx. ओके, तो ये dx आ गया आपके पास. b आपके पास +1 by 2 है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, यहाँ से लिखते हैं 1 by 2 into x, c is +9 by 2, ये आपके पास वैल्यू बनी, होल अपॉन में आपके पास है x square plus 9 dx. इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म के लिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, दिस इज नथिंग बट log of x plus 1, क्योंकि नीचे जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन होगा डायरेक्टली इंटीग्रल log में कन्वर्ट होगा. एंड नेक्स्ट टर्म में हम देख सकते हैं 1 by 2 आउटसाइड x upon x square plus 9, तो इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, और नेक्स्ट के लिए 9 by 2 आउटसाइड इज अ कांस्टेंट टर्म 1 upon x square plus 9 dx. ठीक है, सो 3 इंटीग्रल्स हैं आपने सॉल्व करने थे. फर्स्ट के लिए तो आपने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है, इट इज -1 by 2 log of mod of x plus 1. यहाँ के लिए क्या करेंगे, अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऑब्जर्व करो, सो इट इज 2x, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, दिस बिकम्स +1 by 4, और जैसे ही नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, इसका इंटीग्रल क्या बनता है, log of x square plus 9. सो कंप्लीटली मेरे पास सेकंड टर्म का भी इंटीग्रल हो गया. अब थर्ड टर्म के लिए क्या है, दिस 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर. ओके,
तो यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा 9/2 into 1/8 tan inverse x upon a plus c. Okay, so your final integral is nothing but 1 by minus half log of x plus 1 plus 1/4 log of x square plus 9, and this will be plus 3/2 tan inverse x upon 3 plus c. So that's the final answer to the current problem. So just look at the start. At the beginning हमारे पास जो expression था वो रैशनल फॉर्म में है. रैशनल फॉर्म से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक किया. पार्शियल फ्रैक्शन में a b एंड c की वैल्यूज निकालने का टास्क होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है. सो आइदर यू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x और यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 0 एंड 1. वहां से आपने इक्वेशंस बनाई, वहां से उनको सॉल्व किया. ओके, एंड देन ईच इंटीग्रल को आपने इवैल्यूएट किया. नीचे वाली टर्म पे इंटीग्रल होगा, ऊपर तो सीधे लॉग लगाओगे. यहां पे 1/x² + a² के इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स x by a से आपने अप्लाई किया. सो इफ यू डोंट रिमेंबर द रूल्स, लिस्ट जो है इसकी वो अलग से बनाओ, उनको याद करो और उनको डायरेक्टली अप्लाई करो. ओके, सो दिस इज द आंसर टू द करंट प्रॉब्लम. नाउ लेट अस टेक अनदर वन. सेवंथ क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप ऑब्जर्व करो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. ओके, सो इफ आई पिक दिस क्वेश्चन, लेट्स मार्क दिस थिंग एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन वर्क करेंगे. देखो, न्यूमरेटर में sin x है, सिंगल एंगल x है, डिनोमिनेटर में sin x - a है, जो कि डिफरेंस फॉर्म में है. सो अगर मैं इसके कॉन्ट्ररी न्यूमरेटर में कोई टर्म बनाऊं जो ऐड या सबट्रैक्ट फॉर्म में हो, by making an assumption, let's say x - a equals to t, तो इसका डेरिवेटिव होगा dx equals to dt, and this further gives me that x is nothing but t plus a. So your integral I will reduce to sin of t plus a upon sin of t. Okay, and dx gets converted to dt हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन बनी है. अब इसमें क्या बनेगा कि न्यूमरेटर में मेरे पास sin की आइडेंटिटी लग रही है. If you remember, sin x plus y is sin x cos y plus cos x into sin of y. Okay, so as per the identity हमने इसको सिंप्लीफाई किया. नीचे आपके पास sin of t है, ये आपने मेंशन किया, और यहाँ पे ये चीज़ है. ठीक है, तो ये क्या बनेगा sin t cos a upon sin t which is cos of a plus cos t sin of a upon sin t which is cot of t into sin of a and dt. Just remember, dt says that you are integrating with respect to the variable t. So cos a is constant, इसको outside इंटीग्रल लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी with respect to t. Similarly sin a मेरे पास constant है, इसको outside इंटीग्रल लेते हैं, तो आप cot of t की इंटीग्रेशन करोगे with respect to t. Okay, so integral becomes cos of a into t plus sin of a into cot t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log of sin mod of sin t plus c. now बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं. अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं t की वैल्यू, तो दिस विल बिकम x plus a over here plus sin of a into log of sin of x plus a plus c. this is x minus a, but थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x minus a. ओके, सब्स्टिट्यूशन में आपने ये चीजें देखी है. Alright, so plus c, this is my answer. Okay, so this is the complete integral to the question. अब देखो, यहाँ पे हमने एक मेथड सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई किया है. अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक डिफरेंट और ट्रैक से ऑब्जर्व करो, तो मैं इसको एक बार और लिख सकता हूँ. I can write this thing as that this x is nothing but x minus of a plus a. Okay, आपने इसको x minus a की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. क्यों किया? क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में x minus a. This is the same method but without substitution. Okay, तो क्या करेंगे, sin of x minus a plus a आपने इंट्रोड्यूस किया. नीचे आपके पास आ गया sin of x minus a, और यहाँ पे आ गया आपके पास dx. Okay, now there is no need for substitution, but हम डायरेक्टली अभी भी मेथड मोर और लेस सेम अप्लाई करेंगे. sin x minus a into cos of a plus cos of x minus a into sin of a whole upon sin of x minus a and dx over here and integral. Okay, so again distribute the function. This is going to be cos of a, denominator को distribute करने पे dx आ गया, plus this will become cot of x minus a into sin of a dx. Okay, this will become cos a outside, integration of 1 dx, sin a is constant, take outside, into integral of cot of x minus a dx. This will become cos of a into x plus sin of a into log of sin of x minus a plus c. This is again the final answer.
आंसर. Okay, so both the methods are correct. It's up to you how you want to proceed in the question. You can go with the substitution like x minus a equal to b over here, or you can write your sin x in the numerator as x minus a plus a, क्योंकि नीचे आपके पास sin x minus a. Okay, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करके आपने न्यूमरेटर को लिखना है, ब्रेक डाउन करना है, फंक्शन को सेपरेट आउट करो. इफ द फंक्शन इज x तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट, और cos ए कांस्टेंट है इसको आउटसाइड रखा और आपने फर्दर इंटीग्रल को कंप्लीट किया. ओके, सो आई होप यू गॉट बोथ द मेथड्स. दे आर सेम बट सेकंड मेथड आप बिना सब्स्टिट्यूशन के अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e टू द पावर log x minus e to the power 4 log x upon e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x. ओके, ये आपके पास मेथड है. तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करो हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है लॉग की, अगर आप ओवरऑल सारे प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करो तो हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए, देयर आर टोटल 10 प्रॉपर्टीज. हम उनमें से 3/4 को एक बार ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी बिकम्स log of m plus log of n. This is log of m minus log of n. This is n times log of m and this is 1 over. Okay, so as per the result अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, so थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में लग गया. यहाँ पे सीधे आ गया log of x minus e to the power log of x to the power 4 upon e to the power log of x to the power 3 minus e to the power log of x to the power 2 dx. Okay, तो आपने थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड. Okay, now this becomes देखो e और log ये दूसरे एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं. e is technically the anti log of the function. जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो आपके पास लिखा जा सकता है दैट भाई e log of x to the power n is nothing but x to the power n over here. Okay, so you can add this as a property. तो ये क्या बनेगा, this is going to be integral of x minus x to the power 4 upon x cube minus x square dx. अभी तो क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग दोनों रिमूव हो चुके हैं. आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन बच रहा है पॉलिनोमियल फॉर्म में. एंड इफ आई ऑब्जर्व आई कैन टेक x square common from the denominator and left with 1 minus x and dx over here. Okay, so simplify the expression. This becomes 1 by x over here. This is nothing but 1 by 1 minus x and 1 plus x square whole upon 1 minus x dx. Okay, this factor again cancels out. If I once again distribute this x over the whole numerator, 1 by x plus 1 plus x, और इंटीग्रेशन आपके पास और भी सिंपल हो गया. क्या बनेगा इंटीग्रल इस केस में, योर इंटीग्रल विल बिकम 1 by x के लिए यू नो दैट इज log of mod of x. 1 के लिए आ जाएगा आपके पास x एंड x के लिए आपके पास बनेगा प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर बनता है फॉर द करंट क्वेश्चन. सो जस्ट हमने कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया. मैंने बेसिक 4-5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखे हैं. टोटल देयर आर 10 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी, बट यहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज था तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया. वहाँ से एक्सपोनेंशियल और लॉग को कैंसिल किया. आपका एक्सप्रेशन नॉर्मल रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हुआ है. सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया और डायरेक्टली इंटीग्रेट किया. सो आई होप यू गॉट द कांसेप्ट एंड द क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next question is cos of x upon 4 minus sin square x. I don't think that I need to solve this question. एक मेरा हिंट ही आपको सफिशिएंट होगा. न्यूमरेटर में cos x है dx है, तो think of a function इसका डेरिवेटिव cos x बनेगा. तो कौन सा फंक्शन होगा वो sin x. So let sin x equals to t. इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा cos x dx is equals to dt. इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा dt in the numerator and in the denominator is 4 minus t square. डायरेक्ट आपके पास रूल लगेगा, so rule based thing. तो आ गया dt upon integration of 2 square minus t square. If you remember the rule, तो इसमें क्या बनेगा, this is going to be log of t plus root of 2 square minus t square plus c. Once again t को बैक सब्स्टिट्यूट करो, t की जगह क्या पुट करोगे sin x 4 minus sin square x plus c and this is your complete integral and the final answer. Okay, so this is the basic सा क्वेश्चन था. एक mere substitution थी जिसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया. Okay, not that difficult. Now let us move on to the next one. 9th क्वेश्चन हो गया हमारा 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में आपके पास sin of sin to the power 8x minus cos to the power 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x है. अगेन आपके पास पावर्स हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ब्रेक डाउन के लिए क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं हम sin to the power 4x whole square minus cos to the power 4x
होल स्क्वायर. ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. लेट्स जस्ट सी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कहाँ तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है और उसके बाद हम उसको फर्दर कैसे लेके जा सकते हैं. ओके, सो दिस विल बिकम साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इनटू साइन टू द पावर 4x, इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x व्हिच इज अगेन कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx. Okay, and in the denominator you have 1 minus 2 sin square x into cos square x. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन आ गया आपके पास. अच्छा, यहाँ पे हम अगर इसको देखा है तो इसको भी मैं एक रूल की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ which is sin square x plus cos square x. Okay, okay, so we have sin square x whole square and cos square x whole square. इसको इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं. इस पे फर्दर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं which is nothing but sin square x plus cos square x into sin square x minus cos square x dx. डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बनेगा 1 minus 2 sin square x cos square x. ठीक है, काफी हद तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया. नाउ यू नो दैट दिस इज नथिंग बट इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी और दिस इज नथिंग बट अगर इसको ऑब्जर्व करो बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x. ठीक है, इसको मैंने यहीं पे स्टेप पे मार्क कर दिया. इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक रूल बनेगा. यू नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ये रिजल्ट है. कहाँ से बना? बनाने के लिए अगर आप देखो तो आपके पास रिजल्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. ओके, ये आपका जनरल आइडेंटिटी है. सो इन दिस आइडेंटिटी आई एम जस्ट राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो हमने क्या किया, ये टर्म राइट साइड पे शिफ्ट किया तो नई आइडेंटिटी बन गया जो कि हम यहाँ पे इनसाइड द फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करना चाहते हैं. तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर व्हिच इज a plus b whole square of this thing, okay, and minus 2ab, so it will be minus 2 sin square x into cos square x. Okay, let's break the complete the bracket over here. यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है. ये हमने माइनस ऑफ cos 2x लिखा तो ये dx आ गया. डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 minus 2 sin square x into cos square x. Okay, I hope by this step आप सबको ऑब्जर्व हो चुका होगा कि क्या करना है. This is nothing but 1 minus 2 sin square x cos square x will cancel out with this entire factor and you are just left with a simple integral and your integral becomes minus of cos of 2x dx. cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin of 2x, 2 पे x के डेरिवेटिव से डिवाइड करो प्लस c. so this is your final answer. so क्वेश्चन काफी बड़ा सा ऑब्जर्व हो रहा था क्योंकि काफी सारी टर्म्स थी, हैवी पावर्स थी. आपने एक एक करके पावर्स को रिड्यूस किया है, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आए तो डिनोमिनेटर अपने आप ही डायरेक्टली कैंसिल हो गया. जो टर्म लेफ्ट आउट बची वो सिर्फ cos of 2x है, इसको इंटीग्रेट करना उतना ही सिंपल है. ओके, सो हमारे पास cos 2x का इंटीग्रल माइनस ऑफ sin of 2x by 2 है and there was a negative sign outside, so this is my final answer. Okay, so I hope in till this part आप लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. तो एक बार इन्हीं को रिव्यू करो, उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलो. ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने क्वेश्चंस को पिक करते हैं.